क्या क्या है? And mommy has made 27 dishes because I'm turning 27. पूरा time I was feeling ugly. My pants zip has snapped. मैं अगर कहीं बाहर निकलूं और कुछ गड़बड़ नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता. Like I was just in a trance. Not becoming younger anyway. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another episode of Hustle with Sar, where you and I, we hustle together. It's Monday and it's Monday afternoon. We are doing shoots अभी Monday से शुरू कर रहे हैं कि हम shoot करें because I don't have any content to post for my Instagram. I have nothing fresh. There's a flight going on. I want to go on the flight. Look, it's going. कहाँ बिल्डिंग के पीछे? Pollution इतना है कि दिख भी नहीं रहा है. Anyway. I have to finish shoots because I have nothing to post on Instagram and I also haven't done my yearly roundup. Look at the mess in my studio. Like my tote bag is just lying there lava. I have not done any cleanse of 2025, like removed my products which I'm not using, etc because I really need to film my best and worst video. Once I'm done with that, I am so excited to throw everything that I did not use this year and didn't work for me. So finally can make place for new products, new clothes, all that. I need to donate a lot of clothes also. So that's the mission of this week. To film my yearly roundups of 2025, get rid and start fresh for 2026. And I'm also trying to shoot my reels on the G7X Mark III. तो अभी इधर लगाया है, देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है. मेरे vlogs के लिए तो Osmo ही बेस्ट है. You all didn't like the Saudi vlogs में जितना हिल रहा था G7X की वजह से stability and focus is not the best on that camera as much as it is on the Osmo. So I'm trying to use the camera for reels because it's a very expensive camera. I've bought it, so might as well use it. Okay, one hair front, one hair back. Let us begin. Salon nails in ages. I really need to go to the salon, but इतना कंटाला आता ना 2 घंटा जाके बैठने. So press on to the rescue. I have this from Happy Fingers, this from Pep Nails, and I'm just gonna use the Happy Fingers one because it's nice and small. It will look good on my chotu nails. I'm having my evening cup of coffee. I have to shoot now sale content for Impulse. I'm done with my skincare reels. Are we putting that today? No, we're putting the Madeline one. उसके लिए we need badass makeup, and उसके लिए also we need badass makeup ना. The YouTube video के लिए. So काम करते 2 reels I'll do ऐसी जेठालाल वाला and the phone call वाला. I'll do ऐसी without makeup. I'll change my outfit. I'll do must makeup. This is what the press-ons look. Nice ना? Simple and easy. salon में बैठने का patience नहीं लग रहा मुझे. मैं कल भी संडे को सोच रही थी जाऊँ फिर मेरे को कंटाला आ रहा था. Like एक दिन मेरे को सोने मिलता है उसमें मैं salon में जाके 2 घंटा. Like first I used to enjoy with my salon visits and now I really I think this is signs of growing up. You know, I don't like to blow dry my hair anymore. I don't like to get my nails done. Certain things I just don't like to do anymore, which I used to really like doing in my early 20s. And now in my late 20s, I'm like, let it be natural. Let it be how it is. By God gifted. Just I have a serum. I have to shoot for Impulse's Go Nuts sale. So Impulse is gonna have like a sale only on a nutty coffees. That's pistachio and hazelnut. Flat 20% off pistachio, hazelnut 50 and hazelnut 100 and hazelnut 50. Sab kuch at flat 20. Three SKUs at flat 20% off. Only for a limited time. 8th to the 14th of Jan. Impulse की वेबसाइट पे. Later that same evening. जैसे हम मेकअप करते हैं मैं वैसे आपको प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ. So let me first start with the first thing I put on my face and that's primer. The next day. You just add the water and you get a good cup of coffee. तो ये डिजिटल प्रिंट नहीं होएगा जो आप बोल रहे हो तो उसमें मतलब लेकिन अपनी स्पीड कैसे चेंज होएगी? स्पीड पे क्या इफेक्ट आएगा? वही मुझे स्लो में अभी तो जो है ना इम्पल्स के लिए मैंने 2 शिफ्ट कर दी है. सुबह मीन्स 7 बजे से शाम को 5 और रात को 7 बजे से सुबह 5. मैं 24 आवर्स सिर्फ इम्पल्स के लेवल लगा रहा है क्योंकि मुझे स्लो स्पीड से चलाने हो. और फिर भी मैं बट अगर अपन रोटोग्रेवर वाला करे भी तो भी अपनी स्पीड कैसे बदलेगी मैट में? रोटोग्रेवर तो अभी भी मना कर रहा हूँ. रोटोग्रेवर में करेंगे ना तो उसमें जो है ना ये एडिशनल लेमिनेशन नहीं होता है. अच्छा, पॉलीइथिलीन में ही ओके. तो ये अब एक बार तो मेरे को पूछते तो पहले ही करा लेते अपन. क्वांटिटी नहीं थी ना अपने क्योंकि उसमें क्वांटिटी मैडम एक फ्लेवर की 300 500 किलो जाते थे. अच्छा. और अपने वेरिएंट में 15 है.
देखो मैं आपको पहले ही दिन बोलूं कि 40-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। नहीं तभी तो था भी नहीं ना अपने पास, तो वो आग लगी है तो हम लोग भी एकदम हले हुए ही है कि एक ऑर्डर देने को हम लोग डर रहे हैं, बट अभी डिमांड है प्रोडक्ट की तो देना तो पड़ेगा ऑर्डर, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने अच्छे से Amazon Blinkit पे भेजा भी नहीं है, अपनी खाली वेबसाइट की डिमांड है, तो मेरे को मार्केट प्लेस पे भी भेजना है, वो सब भी करना है। The next day. Good morning guys, it is 7th of January. कल मेरा बहुत busy दिन था, so I could not vlog इतना ज़्यादा. I was in office just taking meetings and I was not vlogging because I was just non-stop doing something or the other. Today's day is a little chill. I don't have that much to do. I'm just gonna check my emails. I have the accounts team over, so it's mostly going to be admin related work. एकदम boring office का काम होने वाला है आज. और shoot wise मुझे कुछ नहीं करना है, but I have to help mummy and Reet both shoot a video today. Since my team Sharon is sick, she's not well and she's not come today, so मेरा भी shoot होने वाला था, but since she's not well, she's not coming. That's okay, हमारा कुछ urgent नहीं था, तो it's fine if it doesn't happen. I think I might have to shoot on Saturday though to compensate and get done with everything that I need. ये साल I'm trying to do more sit down videos, more beauty related content, so I get that side out. I was doing a lot in the second half of last year also. तो आपको beauty related क्या क्या देखना है मेरे channel पे, comment below and let me know. I did my best and worst of makeup already. I want to do best and worst of skin, and I have to shoot the mystery box with Quirky. These are videos that I have to do this week so that they go into edit. The next day. Hello, it's Thursday and I'm sitting with my cup of coffee. My hair is blow dried, feeling like myself. Okay, I love my curly hair, but I'm not loving it. जब से वो short हो गया, मैंने उम्र के बाद बहुत short कर दिए बाल, and उसकी वजह से I'm not enjoying the short curly hair, so I'm back to blow drying it. I even want to color my hair because अभी काफी black हो गया है. I like brown on my brown skin more than I like black hair on my brown skin, so I really want to go back and color my hair probably for my birthday. It's my birthday month, in case you forgot guys, it is my birthday month. And सोच रही हूँ मैंने बहुत मस्त कॉफी बनाई हूँ. By the way, this is रात की रानी espresso from Impulse Coffees. It's hitting because I needed it. Like, I'm feeling so sleepy, so it just awakens you. This is like a double shot of espresso in just 2 चम्मच coffee. मेरी देखो पूरी, like, Sharon finishes this bottle every month. She finishes 2 bottles of this. This is how much Sharon's favorite this is. And I put a little bit of cinnamon powder to just give it a little more like a cinnamony taste. So it's espresso with cinnamon. What a nice गरम coffee बनाई हूँ मैंने. And मैं इतना vlog नहीं कर रही हूँ because basically just admin related work. Like January started off very slow and I'm okay with it. I don't have major goals, and I even like just filmed a reel about how this year I just want to take it more slow, more intentional. I don't want to have crazy goals. Like I feel like 2025 I did so much and I overachieved and I got the Cannes Film Festival and YouTube Fan Fest, and okay, I didn't even put those things in my vision board and my mood board, but I got all of that. And फिर उसके बाद इतने नुकसान भी हुए. Like I lost as much as I gained, you know, like the warehouse fire and the tennis bracelet robbery. Like these things really take it out of you also. तो इस साल तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि बस मुझे ना non drama वाला साल चाहिए. Just I don't want too much joy also. I don't want too much sadness also. I just want a plateau here. And I know it sounds like the most blah prayer ever, but that's my literal prayer every day to God, where I'm just like, don't मेरी life को थोड़ी सी boring बना दो. तो अभी मेरी लाइफ थोड़ी बोरिंग चल रही है, इसलिए व्लॉग भी आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. लिटरली मैं रोज सिर्फ उठ रही हूँ, काम पे लग रही हूँ, काम कर रही हूँ अपना और सोने जा रही हूँ. एकदम बेसिक लिविंग चल रही है, बट इट्स ओके. इट्स हाउ आई वांट इट टू बी. आई वांट इट टू बी लेस ड्रामा दिस ईयर. So that's that. This is a very nice lipstick. It's Pilgrim की chocolate tease जो मैंने Best of Makeup 2025 में भी डाला है. मुझे बहुत पसंद है ये लिपस्टिक. एंड मैंने आज बाल ब्लो ड्राई किया, बट ये वाला सेक्शन ना थोड़ा सा ऑयली लग रहा है. पता नहीं क्यों, अभी तो वॉश किया है बट फिर भी ऑयली हो गया. It's okay. I have to do some more content and then I'm going to open a mystery box that Quirky has made for me. So doing a birthday mystery box. ये सेटअप कितना अच्छा लग रहा है ना फॉर अ सिट डाउन वीडियो. ये मेरा फोन है गाइस. फोन की क्वालिटी इतनी टॉप है कि नो कैमरा कम्स क्लोज. So that's why vlogs में I use my phone only mostly. And I've connected the DJI mic. Many hours later. Guys, just look at the mystery box that Quirky has made. It's so beautiful and so gorgeous. अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा बर्थडे है because I'm going to unbox this. I'm so excited to unbox this. इतने सारे presents है मेरे लिए. गाइस हमारा शूट चालू है इधर और इधर टाइम पास हो रहा है. Next is also something edible. I'm excited to eat this. The next day. Good morning guys, it's Friday and क्या आज का दिन, मतलब सूरज कहाँ से निकला है. सब लोग टाइम पे आए आज मेरे ऑफिस में. 11 बजे घंटी बजी, Bonaita entered and after that in 15 minutes even Hassan entered the office. I was like,
आज मैं रो देती मालूम है। और ये मैडम लेट आई है, 12:30 बजे आई है। Because madam has went. मैडम इज ऑलवेज सिक ओनली, इसको तो एक प्राइवेट डॉक्टर। I was so glad the last 3 months I was not sick only. If you remember, कहाँ sick थी? 3 months is not some highest record. December. हाँ बट ये क्या हाई स्कोर है। But इतने में खुश थी कि काम हो रहा था, आज तक नहीं हो रही थी। I was so happy. I told Sara yesterday कि मैं first week full जोश में आने वाली थी and कुछ नहीं, अभी तक एक भी दिन टाइम पे नहीं आई ऑफिस और एकदम 5 में मैं ही टाइम पे आती हूँ इनफैक्ट। बाजू में रहती है। शी शुड बी द वन हु कम्स ऑन टाइम, लाइक लिटरली वेकिंग मी अप। कि why people don't come जल्दी? Why? बाजू में है ना, मतलब वो आलस आता है। वो CEO पूछ रही है why don't you all come on time? Yeah, she doesn't have to catch any train and all. Whoever catches a train comes on time to office. Anyways, that's not what I'm complaining about. I want to change this situation in these arches. I shoot a lot of videos in the studio, of course. उसके लिए बनाया था ये studio. और मुझे ना अभी ये arches बहुत distracting लग रहे हैं for reels. My play buttons look good, but नीचे ना मेरे वो हैरी पॉटर के books और रीत का action figure भी जो मैंने उसके लिए लाया था वो भी मेरे घर में आके रह गया। कहाँ गया उसका action figure? This everybody thinks I watch this One Piece. I don't watch this Naked Man in my studio. It's because of my boyfriend. I got it for him and उसने मेरे को ही चिपका दिया वापस इधर रखने के लिए. It was for his office desk, but now it's here. Anyway, so I want to change this, and there are lots of perfumes that I've accumulated. I used to like keeping perfumes, but now it's like a dukaan over here. It's a dukaan over here. These are gifts that Quirky gave for my family members. So मैंने कल रात को mystery box में खोला नहीं. I'm gonna make my family members open this and get their reaction. So this we can put it back in the walk-in wardrobe. But अगर walk-in में डालेगी तो मुझे याद रहना चाहिए. इसको bedroom में रख. बेडरूम में याद रहेगा। गाइज मेरे वार्डरोब्स की हालत देखो, कपड़े गिर रहे हैं इसमें से। लाइक इट्स इन अ बैड सिचुएशन ऑफ एवरीथिंग इज रियली लाइक नीड्स डीक्लटरिंग, नीड्स डोनेशन एंड मस्त मैं बर्थडे की शॉपिंग किए जा रही हूँ जब यहाँ पर कपड़े रखने जगह नहीं है। दिस इज द सिचुएशन द बिफोर ऑफ द आर्चेस। मेरी चेयर हटाओ तो तुमको दिखे कि कितना पसारा है। गाइज दिस वीकेंड आई रियली वांट टू डीक्लटर। आई से दिस एवरी वीक बट दिस वीकेंड आई एम गोना मेक इट पॉसिबल। ए बहन तू ना चुप कर तू। दिस इज द बिफोर एंड देन टाइम लैप्स। Alright guys, this is the final settled situation. I took away all the Harry Potterness from here, put a photo frame, some impulse, some vintage camera happening here, my amethyst crystal, एक natural money plant. Actually I think money plant मुझे यहाँ से उठा के थोड़ा nature में रखना चाहिए जहाँ उसको थोड़ी sunlight भी मिले, तो उसको मैं इधर shift कर देती हूँ। ये मेरे को लगते रहता है। This is my pen stand. Then I need the money plant here. This mirror also I keep needing, so I'll keep it here. And pack एक सारा का एक मेरा जो कोलैब था मेमोरेबल, तो वो उधर रखती हूँ। फिर ये इधर। Yeah, this is the new organized backdrop जो impulse के लिए भी appropriate है. The only change I need to do is to change that photo frame and put like a full size photo of us, my friends and I. But other than that, looks great. But ऐसा कि like if we are calling couples को, तो some activity जिसमें even boys will like take into it. ऐसा ना हो कि एकदम boring बन जाए. The next day. My white कुर्सी is going guys. ये white कुर्सियाँ इतनी खराब हो गई, इतनी गंदी हो गई है, काला काला पूरा इस पे जमा हो गया। अभी 2 साल हो गए, तो we are changing the fabric for this. We also need to add more chairs to the office because the team has increased. So we've given order for 2 more chairs like this and a sofa like this. Years of marketing that we did, now it's all paying off together because everyone wants to buy the variety pack. Yeah, so actually October we had a fire in the fulfillment service that we used at that time, and of course it was like we had just sort of got an inventory for Diwali, and then this happened. So it took me aback, but then I somehow stabilized. I put my own savings and everything, and like we moved to Amiza immediately, and we could get back operations in 5 days. Now we're doing better in terms of sales and volume and everything, but of course that took like a major hit in the working capital because we are bootstrapped right now. Later that same evening. अंकल इज वेटिंग फोन पकड़ के। मेन उसका ये है कि वो आवे देखे और मैं खा लूं। हाँ यस, क्योंकि मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया। ओ ये क्यों कुछ नहीं
पाव वाला seemed like a scam. I'm telling you. Really, you understood? Yes. मेरे को लगा कि इसने 3 पाव लेने मेरे को 3 माला की ऊपर नीचे कराई है. मेरे को लगा कि ये कुछ कर रही है and मेरे को ऐसा लगा कि it's too early for my birthday. Oh my god, ये सब तुमने बनाई? मैं ऐसे तुम इतना तैयार क्यों हो? 27th birthday, there are 27 items for you to eat. Very good content, I must say. She understood. Yeah, ये सब content के लिए किया गया है और मुझे भगाया गया है पाव लेने. मेरे को इतना स्कैम लगा ही मालूम है. आजा मेरे को बात करने की है. पाव लेने चल, पाव ले. जैसे ही मैं निकलूं ये पाव लेने चल, मेरी माँ मेरे को तो भगाएगी कि पाव लेने के लिए. ये लगी ना. तभी मेरा दिमाग चलने लगा कि हम लोग बर्थडे के लिए ऑब्वियसली कर रहे हैं. बहुत जल्दी नहीं है, अभी 2 हफ्ते है मेरे बर्थडे को. Why voice noting this to पूर्णिमा? अभी तो बहुत ही अजीब साउंड कर रहा है. क्योंकि मेरी माँ को क्या ये मालूम है, उसने मुझे भर लिया तो मेरे बाप ने घर का एडवाइस तो मम्मी से कैसे ली? कुछ नहीं पता है. आंटी ने बोला भाई उसको इधर लेके आना है. Auntie was like, you It tell was her you your want job to, to pick her, you yeah. tell her that you want to talk about some marriage and all. I was like, नहीं काम करके सुन मेरे को घर पे इशू हो गया ये करते हैं. मेरे को आंटी से कुछ घर का बात करना है बस. और वो It was very well executed. हाँ बस thank you. गाइज मेरे साथ क्या स्कैम किया है इन्होंने. मतलब आज था सैटरडे, वर्किंग सैटरडे. आई वाज चिलिंग अच्छे से घर पे, वर्किंग, डूइंग थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ा थोड़ा आराम. और फिर तमन्ना मेरे को बोली मेरे को तेरी मम्मी से बहुत बात करने की, आज अपन मिल रहे. मम्मी से बात करने की. मेरी माँ क्या लाइफ एडवाइस देगी इसको, मेरी माँ को आता ही क्या. तो मैं वो बोली नहीं मेरे को तेरी मम्मी से बात करने की. ओके फाइन. एंड फ्रॉम व्हेन शी इज मेसेजिंग मी, आई रीच, डिड यू लीव, डिड यू दिस. एंड आई वाज इन अ मीटिंग, आई वाज गेटिंग क्रिएटिव्स रेडी फॉर द सेल एंड आई वाज मीटिंग आल्सो. आई didn't vlog because we barely meet anymore, so I don't vlog. Yeah, I know. And then suddenly I was like, And then जैसे मैं लिफ्ट से निकली, she's like, चल नीचे चल, मम्मी को बोल पाव लेके आने का. अरे पाव क्यों लेके आने का मम्मी को? मम्मी would never send me to get पाव because she has छोटू. I'm asking her what is छोटू doing? She's like, छोटू है ही नहीं घर पे. पाव नहीं है, छोटू नहीं है. हो क्या रहा है? कितने झूठ पे झूठ बोले जा रही है. She's so spot. फिर मम्मी को कॉल की, मम्मी पाव कितने चाहिए? She's like, पाव क्यों चाहिए? And तभी मेरे को सस्पिशियस होने लगा. ये बोलती है पाव चाहिए. कौन बोला पाव ला रहे? तो अरे आपने तमन्ना को बोला. हाँ जितने भी पाव उसके पास लेके आ रहा. And Mummy has made 27 dishes because I'm turning 27. अरे माँ क्या you made it a lot. बहुत सारा बना यार मम्मी इस बार तुमने. मेरे बर्थडे का प्रॉपर कंटेंट यूजेज किया है मेरी माँ ने. मतलब तुम मेरी ही सगी माँ हो, इसका मुझे फुल गारंटी है क्योंकि ये पूरा कंटेंट बनाया गया है. किसने शूट किया बनाने का मेकिंग? वृंदा द ग्रेट. व्लॉग जैसा लिया. आने का मम्मी नहीं खा रमजान से पहले समोसा खाने मिल जाए तो क्या ही मजे. और ये पेटीज जो तेरी फेवरेट है. This is like my birthday iftari. So good. 27 dishes because I am turning 27. This is the best gift you ever given me, mummy. Best. कोई भी इतना मेरे लिए करेगा ही नहीं. मैं बोल रही थी आंटी को थोड़ा रोएगी. फिर आंटी ने बोला रोएगी नहीं. मैंने बोला थोड़ा सा मेरा रोना ड्राई आउट हो गया. रॉन्ग पे गया. वो दिल से जो खुशी महसूस हो रही है तो मुझे थोड़ा इतना आँख में दुख पानी. था कि अब मैं एकदम खुश हूँ. थोड़ा आँख में पानी. नहीं मेरा ऐसा नहीं होता. कौन कमांड दिए क्या? मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस थोड़ी हूँ कैसा बोला तो रो दूंगी. मैं खुश हूँ. इतना खाना देख के रोएगा कौन? माशाल्लाह. Ishko, you'll cut cake with me? Yeah. Waiting to eat only. Waiting to eat my cake? Yeah. Happy birthday, not yet to me. Then just one bite only feed me. ऐसा करो फिर ऐसा करो. तुम मत उधर से. अरे मैं तो भूख लगा. हाँ ऐसे. ठीक है. हाय हैप्पी बर्थडे. बर्थडे में बॉडी बनानी बच्ची है ना. अभी से केक मेगा नहीं मिल रही है तो मेरे को जहान मिल गया. सुन मिला. यस
नहीं मुझे कल मिस यस मैं जब तक कंप्लीट करूं मेरा आंटी वाला मेरे पास है भाई अभी तू इसको ले तू ही उसको ले जा Ishan is wearing my fur jacket जो Savannah Hall. Oh my god, look at him. He looks like a Cuban gangster. So, look at me. पूरा fur मेरे body पे. You don't have a dog now, so this is what it feels like. The next day. What's up, guys? It's Sunday and I am dressed to go to the Lucky Ali concert. It's his India tour and he's in Bombay. And this is my first concert in Mumbai. मैं कभी भी मुंबई में concert नहीं गई. My first concert in India also happened just recently when I went to Cherry Blossom Festival. And this is my first concert in Mumbai. I really love Lucky Ali's songs. One of my favorites is Hairat. And all his songs from Kaho Na Pyar Hai. And so many of his songs have healed me through my teenage. So I'm so excited to see him perform live. We have the fan pit tickets and it's at 7. We are leaving only at 7 because I had a really rough Sunday. I've had a really rough weekend overall. Uber से जा रहे हैं हम drive करके नहीं जा रहे हैं. Preet and I are going of course. Today I was not even feeling confident in my body. I'm not PMSing but I just like I'm not feeling confident. Now that I'm dressed, मतलब आप मेरा get ready with me देखोगे ना मेरा पूरे mood swings हुए get ready with me में because पूरा time I was feeling ugly and just not pretty and just didn't want to get ready and I had a Sunday where I was just feeling so blah, demotivated and didn't even want to go for the concert. But I'm so excited now that I'm dressed कि हम जा रहे हैं and we're going to see him perform live. And it's my first Mumbai concert. I usually don't go because there's so much traffic in Bombay and whenever somebody's performing there's so much traffic and rush there. So I never enjoy Bombay concerts because Bombay doesn't know crowd management and people management because we have so many people in Bombay. But I'm excited to go today. Let's see. First time मैं भी देखती हूँ कि कैसे मुंबई मैनेज करता है अपना crowd situation. ये मेरा न्यूज़पेपर क्रॉप टॉप है जो मैंने स्पेन के टाइम आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाया था. इस पे YouTube वीडियो भी है उसके साथ मैंने स्कर्ट भी बनाई थी. But Reet said no to wearing the skirt because he's like पूरा अखबार दिखोगी. So actually I had a lot of good top options but nothing was looking good with the pants. These are my basic black pants and Jan was giving me a jacket just to be protected in the Mumbai सर्दी and from the Mumbai stairs. ऐसे इतने लोग नहीं देखते but उसके बाद शायद we might go to Baghdadi to eat. So just getting a jacket. Uber driver's calling. Let's go. Black वाला बहुत अच्छा लग रहा था. हमने दिखाया नहीं vlog पे. Reet is picking his jacket. This is Zara. This is West Side. I think this is a cool new color though. I don't know. Bomber के यही these are staple colors brown blue. This is burgundy. It's cherry red. No, इसकी फिटिंग अच्छी है. Fitting is not that great. It's not like a bomber jacket fitting. No, it looks good for another occasion, maybe not. It's good only. I like it. It's too long for you. वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था. Smart लग रहा था उसमें. वो पहनो black. What do you? It's also not looking bad. It's looking good. देख लो अपने आप को अच्छे से. I've put on a denim jacket. वो लटक रहा है. वही तो मैं बोल रही लंबा है. इसमें भी कुछ है जिप पे वो प्राइस टैग का. दिखाओ इधर. A few moments later. Guys, we literally reached the dome after 1.5 hour drive. And we reached and I was going to pay the Uber and that's when my zip snapped. My pants zip has snapped. Zara's clothing. Zara is pathetic. And अभी वापस I'm also wearing Zara only. हम वापस Zara ही जा रहे पैंट लेने के लिए क्योंकि और कौन सी दुकान है? H&M जावे. बट मैं मॉल में कैसे घूमूंगी ये ओपन लेके सिचुएशन? ऐसे पकड़ के. This is the second time my vlog's title is going to be my pant has snapped because my Zara. Really, you know, honestly, this pant मेरी हाइट उसकी नहीं है. जब मैं पतली हो गई थी तो हम लोगों ने टक्स मारे थे इसको अंदर लिए थे. मैं वापस मोटी होने के बाद इसको खुलाना चाहिए था तो it's not Zara's fault. It's मेरा मोटापा जो हमने ओपन नहीं किया. अभी what will I do? We're going to the mall. We reached the concert location and now we are going to the mall. ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? लिटरली हम पहुंचे डोम. हम पहुंच गए और सेम उबर वाले भैया को बोला अभी न्यू ट्रिप मारो क्योंकि ये ट्रिप एंड हो गया. तो अभी सेम उबर में जा रहे हैं क्योंकि उतरने की भी हालत नहीं है मेरी. शायद तुमको जाके लाना पड़ेगा. Okay, बता देना. क्योंकि मैं उतर भी सकती कैसे हो? मैं चेंज कैसे करूंगी लेकिन? Why not? उधर चेंजिंग रूम है. और फिर इन लोग बिलिंग कैसे करेंगे? हाँ तो बिलिंग करो. खरीद लो. खरीद के चेंज. But how will I roam? People know me. People recognize me. I can roam in the mall like this. I will hold. Give your jacket. Now you'll have to roam in banyan and have to tie your jacket. You have this. No. You have this. No. अरे why in the banyan? Okay, I'll use this and tie it around my waist. वो तुम concert में भी कर सकते थे ना? Concert में नाचोगी गाओगी. Time तो जाएगी.
शेरन को बोला था कि अब मैं मोटी हो गई हूँ, वापस इस टक्स को जो अंदर लिया था जब मैं पतली हुई थी उसको खुलवा दे। खुलवाया होता तो आज ये हाल नहीं होते मेरे। बस मैं झुकी और ये खुल गया। ज़ारा को नहीं ब्लेम कर सकते टेक्निकली। ज़ारा को ही करो ब्लेम। एक साल में उनका कपड़ों का रंग निकल जाता है, कपड़े फटने शुरू हो जाते हैं। 5,000 का एक वो सरोजनी में आता है ना 500 के 4, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। I wanted off duty के trousers यार, मेरे को चांस ही नहीं मिल रहा है। Off duty is very घर के सामने है यार। मैं लेके आया। I know Reet is wearing off duty. Zara is not Zara. Off duty has, in terms of laws, no one beats them. I know. We're reaching. Luckily Palladium is close to the dome जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है, तो हम Palladium जा रहे हैं अभी। एक तो रीत और मैं barely घर से निकलते हैं, हम दोनों कहीं नहीं जाते पूरा टाइम। हम मतलब वो काम में लगा रहता है, मैं काम में लगी रहती हूँ। आज मैं रीत को लिटरली बेग की क्या, आई एम फीलिंग लो, लेट्स गो, एंड ही वाज आल्सो लाइक ओके फाइन लेट्स गो, वी हैवंट गॉन एनीवेयर आउट इन द सिटी, वी गेट आउट एंड दिस हैपेंस, वी रीच्ड। Guys, this is how I am roaming in the mall, literally. This is one option we've gotten. Guys, crisis averted. I got a pant in Zara last minute fatafat and I changed into these baggy pants. We're sorted, let's go. What a mess. मैं अगर कहीं बाहर निकलूँ और कुछ गड़बड़ नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। I just need to remove the price tag which I'm still wearing, but these are much more comfortable. They've got a lot of bag around the waist. Reet is getting me McDonald's because I'm hungry and I'm inside Palladium. Let's run. I don't even know at this point if I'm going to make it to the concert because it's 8:40 and it's only till 9:30. So I don't know कि हमको कुछ मिलने भी वाला है कि नहीं. We can just have dinner here in Palladium and call it a night, but let's try to go. The ironic thing is मेरी Zara की पैंट फटी और मुझे Zara में ही पैंट मिली because और कौन सा ब्रांड्स है, ये सब दुकानों में से क्या मिलेगा। A few inches later. Guys, we made it. 9 o'clock, we've made it. 9:30 concert gets over. Let's see what we get inside. Twenty minutes later. Guys, the performance was amazing. It was so good and we're so glad we went because it's 11 o'clock. अभी खत्म हुआ है, तो when हम जब गए तभी Lucky Ali just came on the stage. He's 67 and the way he performed, the whole band, it was incredible. Like his voice is magical and so many songs were like so soul. I've never even heard them
and they were healing. Like I was just in a trance when I was listening to the whole band was only too good. The flutist, the drummer, everyone was incredible. I'm so glad कि जो भी हुआ पैंट फटी हम तो भी we made it. क्योंकि जब हम Palladium में थे, I was telling Reet कि शायद we should not go क्योंकि we'll not make it, but glad we made it. And now we're walking because it's South Bombay. There's good space to walk and taxi. So अभी सब लोग Uber book कर रहे होंगे. Guys, we've come to South Bombay, the beautiful South Bombay, to Baghdadi's for food, dinner. Inshallah, किसी दिन हम South Bombay वाले होंगे Reet. आज इतने लोग नहीं हैं. The naan is so good looking. He's chicken buna. I've taken mutton buna. क्या गरम रोटी होती है यार. This is my college days in a nutshell. Good? I told you this looks good. Later that same evening. Alright guys, I'm back home. I'm gonna take off my makeup and it's 2 o'clock and I have an early morning call time tomorrow, 8 o'clock. I shooted this kajal, stayed so nicely. It's the PAC Studio HD kajal and बिल्कुल bleed नहीं हुआ, मेरी आँखें जल भी नहीं रही, which is a first for me in kajals. I usually don't wear kajals for so long in the night. But yeah, I am going to use the Garnier Micellar water, take off my makeup. I know the whole week was like just me working because what else am I supposed to do in the week? And then weekend was supposed to be chill and we had a lot planned Reet and I for the weekend. But कल वही था मेरा girls night plan था तमन्ना के साथ, तो आप लोग ने देखा कि how they surprised me, which was like totally unexpected. I didn't expect that at all. It's like this year I have no birthday excitement whatsoever. मुझे बिल्कुल भी था वो birthday का. Like usually I am that girl, okay, I get very excited for my birthday. I start preparing, I start planning. New Year's आता है और मैं एकदम से plan करने लगती हूँ. And this year I just don't feel the same anymore. I'm just like go with the flow energy for 2026 anyway. I don't know, Papa बोल रहे थे 27 is such a lucky number. Yeah, I'm turning 27 and I'm like, it just makes me feel like I'm going to turn 30 in the next 3 years, so it doesn't make me feel the same way. But anyways, I loved what mom did for me. That was such a sweet gesture. ये हफ्ता भी busy रहने वाला है. I'm going to try to go for my birthday outfit from scratch and some shopping probably, because आज हम जब Palladium गए because of this whole fiasco with the pants situation at Zara. Although even though last minute I got some really nice pants from Zara today, बहुत ही comfortable थी and I'm glad that I was into those pants because ये जो मैं जब last year पतली हुई थी और जो मैंने टक्स मारा है ना मेरे pants में, वो तो ज़्यादा टिका नहीं. वो तो मेरा weight loss I think 2-3 महीने ही टिका. उसके बाद I'm back to my usual weight. On the weighing scale तो I'm 86-87 kgs only and full year I stay the same weight. The goal is only not to get heavier, but my muscle quality is because I go to the gym regularly, so if you can see my muscle is there like definition, but the fat layer is not like becoming thinner because I don't like. अगर मेरा मन किया अब मेरे को शुगर खाना है तो like आज मुझे बहुत डिप्रेशन लग रहा था दोपहर को. डिप्रेशन was strong word, but बहुत like low लग रहा था, तो I ate a full cake. like एक इतना केक आता है बंटी महाजन का strawberries and chocolate जो मैं अपने birthday month में हमेशा खाती हूँ. Those who know me, I eat that cake during my birthday month. Today was the second time in January that I ate that whole cake खुद से अकेले. So if I feel like eating it, I just eat it. But I try to work out to compensate for the damage I do to my body because not becoming younger anyway. So yeah, that's that. ये week काम करने में, align करने में चीज़ें मुझे थोड़ा stress है because sachets are going sold out very fast and I'm worried that I'm not able to keep up with the demand. Like the first time we sold out, I was like wow, but now I'm more like pressuring my vendor कि machine fast चलाओ, sachets ज़्यादा बनाओ, फटाफट करो, क्योंकि Amazon वगैरह में ना जब माल भेजो उसके बाद there's a lot of technical stuff in business and that's really like something that consumes me all week. Gotta figure all of that out tomorrow. Plus we have a shoot for just a few campaigns for Amazon and YouTube marketing, Google marketing, all that. So yeah, brand side of things. This year again I'm gonna try a little structure for myself. Jab Monday, Wednesday, Friday I do impulse coffees and Tuesday, Thursday, Saturday I do Sara Sarur. पहले मैं किया करती थी बहुत पहले. It used to really help me bifurcate my brain better. So I'm gonna try that again this year. Let's see how successful I am. अब 20 साल शुरू हुआ है, so I don't know.
yet. Usually I don't use micellar first, I use cleansing balm सबसे पहले. But for some reason Sharon has done some things and I can't seem to find. All my favorite skincare is on the sofa here. I have to do my best of skin 2026 5. I'm so confused. 2025 खत्म हुआ, 2026 start हुआ है. Okay. Best of skin, worst of skin करना है from लास्ट ईयर. वो वीडियो शूट करके मुझे एक्चुअली आज डालना था संडे को, बट हो नहीं पाया. फ्राइडे को बहुत बिजी दिन था तो शूट ही नहीं हो पाया. फिर ऑफ कोर्स एडिट नहीं हो पाया. कोई बात नहीं, आई विल शूट इट प्रोबेबली ऑन ट्यूसडे एंड देन गिव इट फॉर एडिट. और ये वाला व्लॉग आप ट्यूसडे को देख लोगे. सो we're good. Using the Vanilla & Co cleansing balm. I'm actually feeling so sleepy because it's 2 o'clock in the night. मुझे था कि मैं मेकअप के साथ ही सो जाऊँ, but of course that's not a healthy habit and we shouldn't do it. The concert was so healing though. It was so soulful. The music was so this, and most of the crowd was like 30-35 because Lucky Ali is mostly like his songs were popular back then. He's 67, right? So his songs is not Gen Z audience नहीं थी, एकदम older audience थी, which is एकदम वेल बिहेव्ड ऑडियंस थी. एंड बिल्कुल भी क्राउड का पुशिंग वो सब नहीं था. क्राउड मैनेजमेंट भी अच्छा था. पीपल डू डबल क्लेंजिंग, आई डू ट्रिपल क्लेंजिंग. आई डिड 2 cleanses already, micellar and cleansing balm. Now I'm using my Dermalogica Milk Foliant face wash. I freaking love this face wash. ये ऐसा पाउडर के जैसा बाहर आता है एंड देन उसको ऐसा पानी में घुलाओ तो फेस वॉश बन जाता है. इट्स सो सॉफ्ट ऑन द स्किन एंड सो नाइस. इट लिटरली फील्स लाइक वॉशिंग योर फेस विद कच्चा दूध. और मेरी दादी को कच्चे दूध का बहुत ऑब्सेशन था. वो इतना कच्चा दूध लगाते थे स्किन पे और मेरे को बोलते थे कच्चा दूध लगा, गोरी हो जाएगी. उनको ये लोग जो पुराने जमाने के लोगों को गोरेपन से बड़ा ऑब्सेशन था. ऑफ कोर्स आई शुड नॉट लाइक, बट whenever I use this face wash, I remember of her. And now, of course, fondly, because she's no more. But तभी मुझे irritate होता है, बोलते गोरी हो जाएगी. गोरी तो नहीं होती हूँ मिल्क फोलिएंट फेस वॉश यूज करके, बट स्किन अच्छी साफ लगती है. मुझे होना भी नहीं है गोरा. I love my skin however it is. Healthy, very healthy. Cleansing में I don't do any कंजूसी because removing makeup is very important, very very important. इसके बाद कंटाला है तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के सो जाऊँ. I will not put any सीरम वीरम कुछ नहीं, सिर्फ मॉइस्चराइजर. But to cleanse your face, just remove everything nicely. So see, the clogged pores, ये जो दिख रहा है ना, ये usually makeup related acne होता है. तो सोचो इतना मैं अच्छे से साफ करती हूँ स्किन तो भी मुझे होता है because I just apply makeup so often, right? So these छोटे pimples are not hormonal. These are mostly your dirty makeup brushes, your blush expire हो गया कुछ, you know, उसकी वजह से होता है. मेकअप चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है, गंदा है, या आपके हाथ गंदे है, whatever could be the reason, या आप मेकअप निकाल नहीं रहे हो अच्छे से. Alright guys, I'm going to go to sleep and this is it for today's vlog. I hope you enjoyed watching the first week of January in my life. If you did, don't forget a big thumbs up. Let me know in the comments what are your New Year's resolution. आप लोग ने कुछ प्लान किया है? आपका New Year's कैसा था? आप क्या 2026 से चाहते हो? What do you really want from this year and how are you planning this year? Let me know. I would love to chat with you all in the comment section. For today's video, the Sarah Squad shout out goes to Anu Centric. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be part next to the Sarah Squad shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sarah Squad and transfer next to the Sarah Squad shout out. As you guys know, bye. Love you. Alright guys, I'm going to go to sleep and this is it for today's vlog. I hope you enjoyed watching the first week of January in my life. If you did, don't forget a big thumbs up. Let me know in the comments what are your New Year's resolution. आप लोग ने कुछ प्लान किया है? आपका New Year's कैसा था? आप क्या 2026 से चाहते हो? What do you really want from this year and how are you planning this year? Let me know. I would love to chat with you all in the comment section. For today's video, the Sarah Squad shout out goes to Anu Centric. If you want to be a part of next video, Sarah's. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video, Sarah's shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sarah Squad and transfer my next video, Sarah Squad shout out. As you guys know, bye. Love you. Good night.